Hi students, this is class 4 junior maths 3B question number 7, and in this question number 7, make the greatest and smallest number using all these given number on the given digits. ओके तो क्या करना है हमने कि हमें ये नंबर्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. Then obviously you need to know this thing, that if you have to you have to create a greatest number from given digits, then you have to write the digits in descending order. Okay, and if you have to create the smallest number from given digits, then you have to arrange that number in ascending order. ओके, असेंडिंग यहाँ डिसेंडिंग में करना है और यहाँ असेंडिंग में करना है. असेंडिंग डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर एंड असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर. ओके, this is the way that you can create the greatest number or smallest number. If you will arrange the numbers, these numbers in descending order, then you will create the greatest number, and if you will arrange the number in ascending order, then you will get the smallest number from these given digits. Okay, so let's start. I'm writing here for greater to smaller and smaller to greater. Okay, so find the greatest number from this greatest digit from this group. So this is 3, 1, 7, 5, 9. Then which one will be greater? 9. So write it on the first place, 9, and after that we will search the next greatest number from the rest digit. This is 7, so we will write the 7, and after that 7 के बाद कौन सा बड़ा होगा? इन दोनों को कट करेंगे तो this 5. Then write 5, and after that इन दोनों में कौन बड़ा है? Then obviously 3, and after that the smallest will be on the last place. Okay, so this is the greatest number formed from these given digits. Okay, and इसके अपोजिट अगर आप इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, देन दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. सो वी विल इसे हम लोग उल्टा करके लिख देंगे. देन इफ़ ये अगर ये सबसे छोटा अंक डिजिट सबसे लास्ट में है, देन वी विल प्लेस इट ऑन द फर्स्ट प्लेस. सो एंड दिस विल बी ऑन द सेकेंड. इसे उल्टा कर देंगे हम लोग फाइनली, एंड वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, एंड द नेक्स्ट वन. So find the greatest digit on this group, 6, 8, 2, 0, 4. So which one will be greater? 8. So write here 8, and after that 6. 6, write 6, and after that 4 and 2. And finally 0. So this is the greatest number, and you have to write the smallest number. So this is 0, but we will not, the rule is that we will never place 0 on the first place. अब कभी भी नंबर अरेंज करते टाइम हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं. ओके, फ्रॉम लेफ्ट. ओके, सो वी विल प्लेस इट ऑन द नेक्स्ट प्लेस. सो आफ्टर 0 कौन सा सबसे छोटा है in this group? Then obviously 2. Then we will write 2, और 2 के बाद हम लोग 0 लिखेंगे, and after that 4, 6 and 8. Okay, now find the greatest number digit. 5, 8, 7, 9, 3, 2. Then 9 is greatest, so write 9. After that 8, and after that 7. I will cut it because इससे पहचानने में हमें आसानी होगी कौन सा नंबर हमने
ऑलरेडी लिख लिया है, और बाकी रेस्ट नंबर्स को हम लोग कंपेयर करके उसमें से सबसे बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट लिखेंगे, ठीक है. देन द 5 विल बी, एंड आफ्टर दैट 3, एंड आफ्टर दैट 2. अगेन हम लोग यही काम करेंगे, हम इसे उल्टा कर देंगे. देन 2, 3, 5, 7, 8 and 9, and this will be the smallest. Again question number D, find the greatest one. Then obviously 9 is the greatest, so place it on the first place. And after that the two digits are equal, so we will place it together. एक ही साथ इसे लिख देंगे हम लोग 7 and 7. अगर दो डिजिट इक्वल हों तो हम लोग उसे एक साथ लिख देंगे. ओके, नाउ वी विल कट इट. अगेन फ्रॉम दिस 3 numbers, 4 numbers, 6 is greater, and after that 5, and after that 2, and then 0. Okay, again we have to arrange this number in ascending order, but you have to keep this in mind that we will never place 0 on the first place, okay, while arranging or creating any number. So which one is the smallest? 0 के बाद कौन smallest है? 2. After that 0, 5, 6, 7, 7, 9. Again question number E. Then 8 is the greatest, 8 will be, and after that the 5, and after that this 4, and after that 3, then 2, then 1, and then 0. Again you have to write the smallest number. Same rule, we will not place 0 on first, so write 1. Then after there are 2 digits, two zeros, so we will put it together, 1, 2 zeros, okay. And after that 2, 3, 4, 5, then 8. So we have finished our question number 7. Thank you so much.